read and learn shine so bright. Smart kids grow with moonlight. Read and learn shine so bright. Smart kids grow with moonlight. eSchoolify series fun and true. Learning dreams for me and you. Welcome to eSchoolify series. Assalamualaikum, Sayyida Maryam Naqvi here from the Moonlight International Publishers. Respected parents, how are you? I hope so that you all are fine, Alhamdulillah. Our today's lecture was about lowercase letter N. We taught to the students its formation, its sound, vocabulary words. Now I will guide you how you have to teach at home. अब मैं आपको गाइड करूंगी कि घर पे आपने लेटर N और इसकी साउंड, इसकी फॉर्मेशन और इससे बनने वाले वोकैबुलरी वर्ड्स कैसे करवाने हैं. पहले तो हम सीखते हैं कि N घर पे लिखेंगे कैसे. कोई भी रफ नोटबुक लें, उसके ऊपर डॉट लगाएं सेकेंड लाइन के ऊपर. तो आप बच्चे से कहेंगे स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड लाइन, कम स्ट्रेट डाउन, जंप, मेक अ लूप, small loop. It will make lowercase letter n, small n. The sound of n is अब देखें nose, nose, nail, nail. Now there are two kinds of nail. One is in front of you and one is like जो कील होता है उसको भी nail कहते हैं. आप टेबल पर उस nail को रखेंगे, means कील को. After that needle, noodles, and you could point your nose. Okay, it's very easier to teach. N is for nose, N is for nail, N is for needle. Very good. इस तरह बच्चा इंटरेस्ट भी शो करेगा. जो चीज़ें आप उसके लिए टेबल पे रखेंगी उसके लिए उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाएगा. अगर हम वर्बली कराएंगे नेल, नीडल, तो बच्चे को तो पता ही नहीं कि नीडल किसे कहते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्प्ले दीज थिंग्स ऑन द टेबल. आफ्टर दैट नोमान होल्ड्स अ नेट नियर द नेस्ट. हियर ही लर्न्ड नोमान and noman, and net, and nest. Now who holds a net? Noman. Where is Noman? Near the nest. I hope so you enjoyed it a lot and you will teach very well to the kids. Thank you very much. Allah Hafiz.